welcome. You're watching 6 Stories at 6 on Republic TV with me, Akanksha Khajuria. And this evening, we bring you top 6 stories of the day. 6 stories that matter and you should know about. Starting with a massive revolt in Pakistan-occupied Kashmir. Thousands are on the streets protesting against Shehbaz Sharif government, and then to a strong warning to Pakistan by Defence Minister Rajnath Singh over the military build-up at Sar Creek. In fact, we'll tell you why this disputed area is in focus now. And then to RSS chief pitch for Hindu unity and a larger message of vocal for local amid the Trump tariff threat that he's been giving the last 2 months. And then we'll take you through what has happened in Istanbul today. A mosque was demolished amid heightened security. And then to Karnataka, where once again the fight over who is going to be the next chief minister has started, exposing the Congress party once again. And lastly, a collision between planes at the airport in New York. We'll give you more details about this. These are the top 6 stories that we're tracking today. Let's get started. Pakistan-occupied Kashmir is on the edge, though not for the first time, but this time, this is more serious. We're learning that thousands of protesters are in fact on the streets. They are protesting against the Shehbaz Sharif government. They're raising slogans. In fact, 15 people have lost their lives in the overnight clashes. POK is witnessing one of the biggest unrest in the recent years. Here's more. Pakistan-occupied Kashmir is on the edge. POK is witnessing one of the biggest unrest in recent years. From Kotli, Dadial, Dheerkot, and Muzaffarabad, anger on the streets is palpable. POK has turned into a battlefield as protesters clashed with Pakistani army, 15 civilians killed overnight. Shutter down wheel jam call was given by Shaukat Nawaz Mir, leader of Awami Action Committee. His message was loud and clear: enough is enough. In a fiery speech, he compared Pakistani army and government to a witch bent on killing people. He said that the so-called Azad Kashmir is not free at all, but shackled by decades of exploitation and repression. ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है। तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है और तुम ढोंग रचा रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। आज तुमने ये साबित कर दिया है इंडिया और पाकिस्तान के इस रवैये से, जो आज तुमने आजाद कश्मीर के अंदर इतने दिनों से रचा के रखा है, वो तो काफिर है, वो जुल्म करेगा। तुम बताओ, मीडिया बंद करके, फोर्सेस ला के, बंदूकों डायरेक्ट गोलियां मार के तुम किस जगह पे खड़े हो? Kotli saw a complete shutdown with all the entry and exit routes blocked. Sit-in paralyzed the entire city. But it was 120 kilometers away in Dheerkot where the situation turned deadly. Police opened fire on a convoy of over 2,000 protesters, 4 civilians killed, 16 others injured, including the police personnel. And then 58 kilometers away in Muzaffarabad, sit-ins were witnessed at Lal Chowk where protesters faced aerial fighting and tear gas shell. 2 more civilians were killed. In Dadial too, police fired at a marching convoy, leaving 2 dead and several others injured. Pakistan government tried to save the face, inviting protesters for negotiation, but in the same breath issued a warning of strict action if protests continued. The fire has now spread beyond POK.
Awami Action Committee workers in London will protest outside the Pakistan High Commission later today. At United Nations Human Rights Council too, political activists from POK raised concerns over worsening human rights violations. If any part of the state of Jammu Kashmir, people suffering due to the violations of human rights, and especially since 1947, our people are victim of the Pakistani policies. Theofascism is imposed in POJK and also on Gilgit-Baltistan, and our all human rights has been compromised, and through one act, actually Pakistan directly or indirectly ruled these areas, although the constitution of Pakistan is declaring its own territory, Pakistan territory, and POJK and Gilgit-Baltistan is not part and parcel of the Pakistan. From 29th September, and whole area is locked down. There is no internet, no telephone, and people, they do not have access to any international media or communication. And 3 million Kashmiris are under siege, and they are cut from the international community, and 2 million Kashmiris living abroad. They have no connection, or they cannot talk with their family, and we don't know what is going there. Some reports coming from there through different means. People are killed, injured, and this is unfortunate. A state which is claiming that she is the champion of the right to self-determination of the people of Kashmir, she is badly exposed. And meanwhile, the Pakistani establishment has fallen back to its old script, blaming external agencies for the uprising. But the reality is hard to hide. This is people's movement against decades of suppression, and POK today stands at a historic crossroad. From Kotli to Muzaffarabad, the message is clear. The people of POK will no longer remain silent. And now shifting our focus, no to dependence, no to anarchy. RSS Chief Mohan Bhagwat's message today was unmissable. The RSS chief made a powerful pitch for Swadeshi, warning against violent unrest in India's neighborhood, and hailed the armed forces' strong reply to Pakistan during Operation Sindoor. He gave a call for build strength through self-resilience, vigilance, and also unity. Watch this report. Marking the RSS 100 years in Nagpur, Mohan Bhagwat drew attention to political unrest sweeping India's neighborhood. From regime changes in Sri Lanka to violent protests in Nepal and Bangladesh, he said such uprisings do not deliver real change, but opens doors for foreign powers to interfere. हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही है। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। Turning to the global economy, Bhagwat hit out at the America's new tariff policy, calling it a move made entirely in Washington's self-interest. He stressed that no nation can live in isolation, but warned that dependence on imports must never become compulsion. His call: strengthen Swadeshi and invest in self-reliance. अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। Bhagwat also invoked the Pahalgam terror attack, where 26 civilians were killed after being targeted for their faith. He praised India's armed forces for giving Pakistan a befitting reply, but warned of unconstitutional elements still trying to destabilize the country from within. पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई, और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। Bhagwat's centenary message was not just a reminder of India's challenges, but a roadmap for its strength, vigilance against unrest, self-reliance in the economy, unity in diversity, and an unshakable resolve against terror. His message was crystal clear. A strong Hindu society is the bedrock of a strong Bharat. And now to Sambal in Uttar Pradesh, where bulldozers rolled in today, and on their target was a mosque and a marriage hall. Amid heightened security, structures were reduced to a rubble, and this is not the first time that illegal structures have been demolished in Sambal. Watch this ground report. Sambal is on high alert. A village in Sambal turned into a security zone. Bulldozers, tractors, trolleys lined up for demolition drive. The target, a mosque and a marriage hall at Sambal's Raya Buzurg village, both built illegally on a government land. Government says that the structures have to go. Bulldozers moved in and the walls came crashing down. ये संबल की तस्वीर हम आपको रावा बुजुर्ग की दिखा रहे हैं, जनता मैरिज हॉल की, जो कि इलीगल तरीके से बनाया गया। हट जाइए अभिषेक, ये देखिए आप तस्वीर, ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संबल की। एक के बाद एक वो दीवारें ढाई जा रही हैं, जिनसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढकने की, कानून को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर एक्शन की तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ पर डीएम भी है, एसपी भी है, और लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद है, हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। Police standing guard, ensuring the operation remained peaceful. The illegal structures reduced to rubble and the government land was freed. संबल के थाना असमौली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है, उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाकचौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है, उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था।
इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। The message from Sambal is clear. Illegal construction will not be spared. And once again in Karnataka, power tussle has started. War words over who should be the next Chief Minister of Karnataka for the next 2.5 years. And at the centre of the controversy stands the Chief Minister Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar, both of whom have denied the possibility of a power change in the state of Karnataka. Here's the full report. It's Congress versus Congress in Karnataka once again. It all started with a statement by Congress's L.R. Shivramigowda saying D.K. Shivkumar is all set to become the next Chief Minister of Karnataka for the remaining 2.5 years of the term. ನೂರಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನುಮಾನ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. DKಶಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗದವರು. DK ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ ಅವರು 2.5 ವರ್ಷ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. This ignited a fresh debate, with Congress quickly shifting to damage control mode, prompting both the Chief Minister and Deputy Chief Minister to give strong statements. Chief Minister Siddaramaiah stood his ground, saying he will complete his full term, and then Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar backed the Chief Minister's statement. ಯಾಕಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ಗೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಂತ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಇಟ್. ವಿಪಕ್ಷದವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಸತಿ ನೀವೇ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಂದಿನ ಸತಿ ನೀವೇ ಪುಷ್ಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. ಅವರಿರೋ ತನಕ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. 5 ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌದು. ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರು. 2ನೇ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಕಾಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಿರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರು. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಬಜೆಟು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ 2.5 ವರ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀರಿ? ಇನ್ನೂ 2.5 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀನಿ. As top Congress leaders bat for Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar to be the Karnataka Chief Minister for the next 2.5 years, DKS shut down any possibility of a power change. He has further reiterated that they will obey the High Command's orders, and the ones speaking on it are indulging in anti-party activity. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಾತು. ಆ ಮಾತು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಯಾರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Fueling political debate in state politics once again, Congress leader Mithun Rai has also said that he prays to see D.K. Shivkumar as the next Chief Minister of Karnataka. The latest speculation comes from a recent flare-up in an ongoing power struggle dating back to the Congress victory in 2023 Assembly elections. Following a period of intense negotiation, the party high command had brokered a compromise appointing veteran leader Siddaramaiah as Chief Minister and Karnataka Unit President Shivkumar as his deputy. Political circles have since been rife with unconfirmed reports of a rotational Chief Minister formula suggesting that Siddaramaiah will hand over the reins to Shivkumar after 2.5 years.
Congress MLA Ranganath has also fanned the flames, saying that he wishes DK Shivkumar assumes the role of Chief Minister in the coming days. ಅವರ ಶ್ರಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು, ಕ್ಯಾಡರ್ಸ್ಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಬಂಧುಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತೇವೆ. But Deputy Chief Minister DK Shivkumar has completely shut down the claims backing Chief Minister Siddaramaiah, saying for them the party is more important than the individual. And this is all we could pack for you at 6 at 6. Coming up next is Live and Breaking with Shravan Sen. Thank you so much for watching. Goodbye.